ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है पणजी गोवा में आयोजित 55वें भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की रेडियो रिपोर्ट। This is Akashvani. We now bring you a radio report on the 55th International Film Festival of India being organized in Panaji, Goa. चलती फिरती हंसती बोलती नाचती गाती तस्वीरें, दुनिया के सब रंग दिखाती रूप दिखाती तस्वीरें, पर्दे पर सब राजों से पर्दे को उठाती तस्वीरें, वो दिल बहलाती कभी हंसाती कभी रुलाती तस्वीरें। ये हिंदुस्तानी सिनेमा, ये मूवीज, ये फिल्में रहती है करोड़ों के दिल में। भारत के सिनेमा की है जय जयकार, भारत के सिनेमा की है जय जयकार, भारत के सिनेमा की है जय जयकार। The 55th edition of International Film Festival of India got off to a spectacular start yesterday at Dr. Shyama Prasad Mukherjee Stadium in Bambolim. This year's festival promises to be a grand celebration of cinema with over 200 films from 80 countries. The event will showcase the best of world cinema, including Hindi, Hollywood, and regional Indian films. Present at the opening ceremony yesterday were celebrities from Film Fraternity of India and abroad, including Subhash Ghai, Prasoon Joshi, Manushi Schiller, Boman Irani, Randeep Hooda, Rajkumar Rao, Abhishek Banerjee, Jaideep Ahlawat, Sanya Malhotra, Jackie Bagnani, and host of others. The Honorable Minister of Information and Broadcasting, Shri Ashwini Vaishnav, spoke on this occasion through a video message. Friends, IFFI, as we call it, has become a very important milestone in the development of film industry in India. We in India at this point of time are very much focused on developing the content creators economy. We have a very vibrant creators economy where people are coming up with very innovative content showcasing some of the rich heritage of India, the cuisines of India, the culture of India, some of the gems of Indian language and literature are being presented by the content creators in very interesting ways. So we believe that with the addition of technology and the development of the creators ecosystem, India can play a major role in the way the creators economy is shaping up. We welcome you all to this edition of IFFI and we hope that your stay in Goa will be very interesting. We hope that you'll find new partnerships and develop new ideas here. We hope that some of the youngsters will get mentors. We hope also that many of the ideas that you share with us will help us shape the direction of the industry in the coming years. Thank you very much. Wish you all the very best. This 55th IFFI is attracting film lovers whose love for films knows no bounds. Sai spoke to one such delegate. IFFI का पहला दिन और हमारे साथ है बम्बई से आई हुई एक डेलीगेट। नमस्ते, आपका नाम और कहाँ से आई हैं आप? मेरा नाम स्मृति पारी है और मैं बॉम्बे से आई हूँ। मैं खासकर IFFI के लिए यहाँ पर आई हूँ और आज मैंने फर्स्ट मूवी देखी, उसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ये एक्कोलेज सेक्शन की मूवी थी, पायल कपाड़िया ने डायरेक्ट करी है। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी लगी। कनी कुसुरुति का काम बहुत अच्छा है, दिव्या प्रभा उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छी लगी मुझे मूवी, बहुत मज़ा आया। और आज मैंने पियानो लेसन भी देखी 12:30 बजे, बहुत बढ़िया मूवी थी। ये इंग्लिश मूवी है तो कैप्शंस का वेट नहीं करना पड़ा। मैल्कम वॉशिंगटन ने ये डायरेक्ट की है, बहुत मज़ा आया ये मूवी देखकर। क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप इस बार IFFI से?
ये मेरा दूसरा साल है इफ़ी में। मेरा फोकस इस बार इंटरनेशनल कंपटीशन की जो मूवीज़ हैं उनको देखने पे और उसी इंटरेस्ट से मैं एक्चुअली आई हूँ। हैप्पी व्यूइंग। थैंक यू। दुनिया के सब रंग दिखाती रूप दिखाती तस्वीरें, पर्दे पर सब राजों से पर्दे को उठाती तस्वीरें, वो दिल बहलाती कभी हंसाती कभी रुलाती तस्वीरें। ये हिंदुस्तानी Here's G. Sham with his report on the Indian Panorama section at this IFFI. 55वें भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में भारतीय चित्रावली फीचर फिल्म और गैर फीचर फिल्म अनुभाग में समकालीन भारतीय फिल्मों का चयन किया गया है जो देश के विविध सिनेमाई परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये प्रतिष्ठित अनुभाग असाधारण कहानी कहने, सिनेमाई उत्कृष्टता और सांस्कृतिक विविधता को उजागर करता है जो भारत के जीवंत फिल्म निर्माण परंपराओं की झलक पेश करता है। प्रतिष्ठित जूरी द्वारा भारतीय पैनोरमा के लिए चुनी गई फीचर फिल्में कलात्मक योग्यता, तकनीकी गुणवत्ता और सामाजिक प्रासंगिकता को दर्शाती हैं। इस वर्ष की कुछ फिल्मों के नाम हैं स्वतंत्र वीर सावरकर, आर्टिकल 370, 12th फेल, ये है हिंदी में, बंगाली में भूतपोरी, मराठी की फिल्म घरात गणपति, मलयालम की ब्रह्म युगम, तेलुगु की कल्कि 2898 AD, असमिया फिल्म जुई फूल, गुजराती कारखानू। इंडियन पैनोरमा की फीचर ज्यूरी इस तरह से है: डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो चेयरपर्सन हैं, सदस्य हैं मनोज जोशी, सुष्मिता मुखर्जी, हिमांशु शेखर खटुआ, ओइनम गौतम, आशु त्रिखा, SM पाटिल, नीलभ कौल, सुशांत मिश्रा, अरुण कुमार, रत्नोत्मा सेनगुप्ता, समीर हंचाटे और प्रिया कृष्णस्वामी। प्रातः 11 बजे ईफी में उद्घाटन हुआ भारतीय चित्रावली का। शुभारंभ से पूर्व रणदीप हुड्डा और उनकी टीम को रेड कारपेट पर सराहा गया। फिल्म के कलाकार रणदीप हुड्डा, अंकिता लोखंडे, अमित सियाल, राजेश खेड़ा और मार्क बेनिटन रसेल बैंक। फिल्म का सार इस तरह से है: ये फिल्म भारत की आज़ादी की अनकही कहानी को दर्शाती है जो अहिंसा की प्रसिद्ध कथा से अलग है। कहानी सावरकर के जीवन के 53 सालों को समेटे हुए है जो उन्हें भारत के सबसे विवादास्पद, गुमनाम और गलत समझे जाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक के रूप में चित्रित करती है। ये मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम और उनके अनुयायियों द्वारा झेले गए भयानक परिणामों पर प्रकाश डालती है। गैर फीचर फिल्म की ओपनिंग फिल्म रही लद्दाखी फिल्म घर जैसा कुछ, निर्देशक हर्ष संगानी। इसकी कहानी कुछ इस तरह से है: थिनलास अपने पिता की अस्थियों के साथ अपने सुदूर गांव लौटता है ताकि वो अपने पिता की इच्छा का सम्मान कर सके और उसे शहर में दफनाया जाए। जैसे ही वो अपने अतीत से जुड़ता है, थिनलास को अपनी विरासत और अपने भविष्य के बीच चुनाव करना पड़ता है। इंडियन पैनोरमा में नॉन फीचर जूरी इस तरह से हैं: जूरी अध्यक्ष सुब्बैया नल्लामुथु, सदस्य रजनी आचार्य, रोनेल होबम, उषा देशपांडे, वंदना कोहली, मिथुन चंद्र चौधरी और शालिनी शाह। राहुल सदाशिवन निर्देशित मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम इस समय अच्छी प्रतिक्रियाओं के साथ मडगांव के स्क्रीन पर प्रदर्शित की जा रही है। साथ ही साथ विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित 12th फेल की स्क्रीनिंग जारी है। Australia is the country focus in this film festival. Paul Curry, the producer of the opening film of this IFFI called Better Men, elaborated on his decision to produce a film on the legendary singer Robbie Williams. Paul, how did the idea of making a film on the legendary artist Robbie Williams was conceived? Well, Michael Gracie, when he was making The Greatest Showman, he needed to convince Hugh Jackman that the music was amazing in The Greatest Showman. And Hugh Jackman's biggest influence was Robbie Williams. So Michael ended up playing the music of The Greatest Showman to Robbie Williams in order to get Robbie's endorsement as to how good the music was. And the two of them
started a relationship at that point, and Michael would just record Robbie, and after a while he went, wow, this is an amazing story. Robbie has an ability to tell his stories. He's a rock star for a reason. He's very charismatic, he's very honest, and he tells great stories about his life. So that's where it all began for Michael, and Robbie would always refer to himself as a performing monkey. And out of hearing that a lot from Robbie, Michael came up with the idea, and he said, well, what if this was a movie about how Robbie sees himself, not as how everyone sees him? And thus, Better Man was born of an idea, let's not have Robbie as himself, but have Robbie as the way he sees himself, and that is a performing monkey. What were the challenges that you faced in producing the film? Any interesting anecdotes that you can relate? I said one earlier. We were shooting the biggest musical number on Regent Street in England, and we had huge number of dancers, and the costs of that sequence were very, very large. And the Queen died 2 days before we were starting to film, so we couldn't film, and we lost millions of dollars. And the film got delayed, so we had to try to raise money again, convince people that it was important, that we needed this sequence. So every day there was so many challenges with the film. It was a very hard movie because of the size of it, the fact that it was independent. We were doing it as a lot like the spirit of Indian films. You know, it's a vision and you get everyone behind it and you go for it. And so, yeah, so it had many challenges along the way, but we're really happy with the end outcome. Tell us a little about the independent filmmaking in Australia. How does the Aussie government support you in any way? Yeah, we have a fantastic government. Screen Australia is one of the sponsors of the festival here, and they support all sorts of filmmakers, diverse filmmakers of every size, budget and storytelling type. So the government gets right behind filmmakers, which we need. It's hard enough to make a film. You need support, and yeah, we have a great government system that has rebates, and we just signed a big co-production with India, so there'll be more Indian-Australian collaboration, which there's a lot we can learn from you guys. You have an amazing filmmaking history, and the movies that you make can travel all around the world. It's exciting to be here and be part of this. Now that the film is ready and made, any thought about theatrical release in India? Yeah, I'd love to find the right theatrical distributor. I think obviously the movie would need to be subtitled and some of the swearing may be cut out. But it's, because it's a musical that's very inventive and very creative, a lot like Indian cinema, it would be great to find a market to release it theatrically here. Maybe not too wide, but so people could come and see a very different musical biopic. Any thought of Better Man 2? I'm not sure what happens to the monkey after he's resolved with his dad, but maybe. Never say never. If the monkey works, maybe there's a way where the monkey comes back for something new. And finally, what is your opinion about the ambience here at this film festival? Really, Goa? Goa is an amazing city. It never stops. And to see the scale of this festival has just been fantastic. There really is such a celebration of Indian cinema, and the festival brings everyone from around the world here, which is exciting, and it's very festive. It's fabulous. Anything you can tell about a similar festival in your country, Australia? Yeah, we have the Melbourne and Sydney International Film Festival and the Brisbane, so they're similar. Not on the scale of this though. This is a huge scale. So this is impressive. I've been to a lot of festivals around the world, and this is very, very impressive. So I'll be back, definitely. We think it's high time that you produce a movie in India. I'd love to. I reckon Michael would love to as well. So there might be, we might make something here in Goa. Yeah, that would be great. Yeah, it's a beautiful part of the country. Yeah. Thank you so much and all the best. Thank you. Thanks for your time.
Staying with country focus, here's Priyanka Mayapur with the Australian films that are going to be showcased in this 55th IFFI. Goa, a paradise nestled along the southwestern coast of India. But when the focus is in Australia, you can never miss the Golden Coast. And grabbing this golden opportunity this year, the 55th edition of the International Film Festival of India 2024 is back with a bang. Cinema. It is that fabric of life that informs, educates, entertains, and inspires people. And you know what's the best thing about it? Is that it goes beyond borders. This year at IFFI 2024, Australia has been designated as the country of focus. This edition of IFFI will present a curated selection of 7 Australian films, offering a diverse blend of genres, right from powerful documentaries to heart-hissing dramas, to crime thrillers, and to light-hearted comedies. So be ready to grab a popcorn, and if you're a big fan of nature, then this movie will definitely catch your attention. Written and directed by Robert Connolly, this Australian mystery action thriller titled Force of Nature, The Dry Do, is centered around the story of 5 women who head out on a remote hiking retreat, but only for return, each telling a different story. And federal police agent Aaron Falk must find out what really happened before time runs out. The film In Vitro, directed by Tom McKeith and Will Howard, a 2024 Australian science fiction film, is a story about a woman who discovers the unsettling consequences of her husband's animal breeding technology on a struggling farm. The Mugai, directed by John Bell, revolves around a story of a young mother and her journey to save her children from an evil spirit. That'd be something interesting to watch. Another flick titled Runt, directed by John Sheedy, is a heartfelt and hilarious tale of 11-year-old Annie Shearer and her best friend Runt, who is an adopted stray dog with remarkable abilities. A comedy drama film directed by Mark Leonard Winter, titled The Rooster, follows a police officer named Dan who is forced to take a break from his job after the death of his best friend and his beloved rooster. This film is a study of fragile, lonely masculinity. Absolutely an uncompromising piece. A heartwarming rom-com titled Addiction, directed by Marcel Unum, is a film about celebrating self-acceptance and the things that really count in life. And finally, a true crime docudrama titled The Speedway Murders, directed by Adam Kamian and Luke Rindman, is based on the unresolved murders that claimed the lives of 4 teens working in a burger restaurant in 1978. A good taste for crime junkies. Apart from these films, IFFI will also have various in-conversation sessions and masterclasses featuring acclaimed filmmakers like the renowned cinematographer Sean Seal, who's well known for filming magic in Harry Potter and the Philosopher's Stone, and a legendary director who has made amazing movies right from Salt featuring Angelina Jolie to Fast Charlie featuring Pierce Brosnan, and this master craftsman is Philip Noyce. What a Better Man. And talking about that, A Better Man, directed by an OC director, Michael Gracie, opened this year's gala. So right from showcasing the best of movies on the tinsel screen of IFFI to creating the best of memories, IFFI is absolutely an offer you can't refuse. So that's all we have for today in Country Focus for this year's IFFI, that is Australia. Prasar Bharati has launched its OTT platform named Waves in this 55th IFFI. This OTT platform offers a bonanza of movies, serials, audio, games, shows and live events. Chairman of Prasar Bharati, Navneet Sehgal, elaborated on its features. See, Prasar Bharati has just recently, yesterday only, has launched a OTT platform called Waves. This platform is different in the sense that we are bringing family, clean entertainment to citizens of the country and global diaspora. And this platform is different in the sense that the first time we are bringing not only clean and family entertainment, also we are bringing all the news channels, games for the kids, shopping bonanza kind of, you can do shopping on this. So it is all in all is a one-stop shop, and also we are bringing the archives, the old programs which were there on Doordarshan and our old archives from All India Radio. Also on this digital platform you can download it, and most importantly it is free. You can just download it now and watch all the archives or all programs which you have grown with, which we have grown up with. You can see it on this platform.
Srijit Mukherjee's film Padatik, based on the life of the celebrated Bangla film director Mrunal Sen, received critical acclaim in this IFFI. Dinkar Yadav spoke to Srijit about the film. मैसेज यही है कि इफ़ी में हमारा जो फिल्म का स्पेशल स्क्रीनिंग हुआ है उसका नाम है पदातिक, जो मृणाल सेन जो हमारे देश के जो निर्माता है, एकदम चोटी के निर्माता है, उनमें से एक है। सत्यजीत रे और मृणाल सेन, इन दोनों के कंधों पे जो वर्ल्ड सिनेमा में हमारे भारतवर्ष का जो घुसना था वो इन दोनों के हाथ पकड़ के ही था। तो दोनों में से सत्यजीत रे के बारे में तो सभी जानते हैं, वो बहुत सब सराहते हुए मतलब बहुत सेलिब्रेटेड है, लेकिन मृणाल सेन के बारे में उतने लोगों को उतना पता नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उनका अभी शतवर्ष भी है, सेंटिनरी जस्ट अभी हुआ है, तो उस ओकेजन में अगर हम ऐसा कुछ बनाए जो कि उनके जो फिल्म्स हैं और उनके जो लाइफ है और उनका जो दर्शन है उसको एकदम डॉक्यूमेंट कर दे, क्रॉनिकल कर दे, एकदम हमेशा के लिए कहीं पे उसको स्टोर कर दे, क्योंकि वो बहुत सारी जगह में है, वो एसेज में है, उनके वो डॉक्यूमेंट्रीज है, उनके खुद के फिल्म है, तो उसको एक जगह करके एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं एक एसेट जैसा हो जाए। हाँ, एक एसेट जैसा हो जाए। जो भी फिल्म स्टूडेंट इसके बाद मृणाल सेन के बारे में जानना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं, उनके फिल्मों के बारे में नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, ये फिल्म देख के उनको वो इनिशियल एक इम्पेटस तो ज़रूर मिल जाएगा। उतना तो ये फिल्म करती है मतलब, और वो सब ने बोला भी है मुझे कि हमें इससे पहले हमने एक फिल्म देखी थी, लेकिन 2 फिल्म, अभी ये फिल्म देख के मुझे मृणाल सेन का फिल्मोग्राफी जो है वो ख़त्म करने का मन कर रहा है। सो ये मुझे लग रहा है कि पदातिक फिल्म का जो सबसे बड़ी सक्सेस है वो यहीं पे। सर पदातिक पार्ट 2 पे अब बनने वाला है, ऐसा कोई आपके माइंड में कोई प्लान सर? देखिए पदातिक पार्ट 2 तो नहीं बन सकेगा, क्योंकि मृणाल सेन का 80 साल का जो एक ड्यूरेशन है वो हमने कवर किया है। हाँ, 45 से शुरू करके 2018 तक, उनकी डेथ तक। तो लेकिन ये बात सही है कि जैसे मृणाल सेन का शतवर्ष हुआ, अभी सलील चौधरी का सेंटिनरी है, तपन सिन्हा का सेंटिनरी है, सो बहुत सारे दिग्गजों का भी सेंटिनरी चल रहा है, मतलब आएगा अभी, इनफैक्ट ऋतिक घटक वह भी आएगा 2025 में। तो कर सकते हैं, बना सकते हैं, मतलब सलील दा का तो बना सकते ही है। सर डबिंग भी और कोई जो अदर लैंग्वेज में स्टेट्स में? हाँ, देखिए मृणाल सेन का क्या है, उनका अपील जो है उतना पैन इंडियन नहीं है, थोड़ा सा रीजनल, कुछ रीजन्स है जहाँ पे थोड़ा, जैसे कि उन्होंने तेलुगु में एक फिल्म बनाया था, फिर उन्होंने उड़िया में, लेकिन सलील दा का क्या है, उन्होंने मेन स्ट्रीम में काम किया, बॉम्बे मेन स्ट्रीम फिल्म म्यूजिक में काम किया। तो आज अगर सलील चौधरी का बायोपिक बनता है तो उसमें खुद ब खुद पूरा इंडिया जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा, वो एक अच्छी बात वो है। अगर सलील चौधरी का बायोपिक बनता है तो वो इंटरेस्ट पैन इंडियन होगा। सर आशा करते कि हमारे जो आकाशवाणी के जो लाखों करोड़ों जो श्रोता है तो उनके पास ये जानकारी जाए, और वो हाँ, और आकाशवाणी के श्रोता है तो मतलब उनको तो सलील चौधरी और भी भाएगा, क्योंकि बचपन से तो सलील दा का गाने सुन के हम भी बड़े हुए, वो आकाशवाणी में सुन के ही बड़े हुए हैं। पहले तो तब ये सब इतना सब था नहीं, तो हाँ अच्छा ही होगा अगर हो सके तो। मतलब एक स्क्रिप्ट है मेरे पास, वो अभी मैंने भेजा है सलील दा के फैमिली में, वो देखने के लिए, चेक करने के लिए, तो वो देख रहे हैं, अगर वो पास हो जाता है तो देख सकते हैं। हमारी आर्कियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू की उसका एब्सोल्युटली आर्काइवल एक उसका वैल्यू हो जाएगा। Here is Velma with what's coming up. In the section of What's Coming Up, we have a great lineup of movies. From the international competition section, there is a movie called Shepherds. Following a medical wake-up call, Montreal copywriter Matthias Lefebvre abandons his life in Canada to reinvent himself as a sheep herder in the French Alps, despite knowing literally nothing about the centuries-old craft. And in the international competition section, the movie Red Path will be screened. There is a special presentation on Padatik, and Sunflowers were the first ones to know.
In the Cinema of the World section, the movies to look out for are Mexico 86, The Earl King, Shoftex, Elbow, Lazaro at Night, and Deaf Lovers. There is only one movie in the ICFT UNESCO section that will be showcased tomorrow, Unsinkable. Today, the section on Goan films was inaugurated with 2 Konkani short films, Karwan and Ek Cup Cha, and there are many more coming up in this Goan section in the next few days. The masterclass to look out for tomorrow is Living Movies, Filmmaking and the Creative Life by Vidhu Vinod Chopra. That's it for now. I'll be back with yet another capsule of what's coming up tomorrow. Till then, immerse yourself in the magic of cinema. Well, that's all we have in this report. With lots of movies, master classes, in conversation and press conferences in store for tomorrow, it's time to say goodbye and good night from all of us here in Panji, Goa. चलती फिरती हंसती बोलती नाचती गाती तस्वीरें दुनिया के सब रंग दिखाती रूप दिखाती तस्वीरें पर्दे पर सब राजों से पर्दे को उठाती तस्वीरें वो दिल बहलाती कभी हंसाती कभी रुलाती तस्वीरें ये हिंदुस्तानी सिनेमा ये मूवीज ये फिल्में रहती है करोड़ों के दिल में भारत के सिनेमा की है जय जयकार भारत के सिनेमा की है जय जयकार भारत के सिनेमा की है जय आप सुन रहे थे पणजी गोवा में आयोजित भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण के आज के दिन की रेडियो रिपोर्ट। ये आकाशवाणी पणजी की प्रस्तुति थी जिसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। You were listening to a radio report of the 55th International Film Festival of India being organized in Panaji, Goa. This was a production of Akashvani Panaji and came to you from the Delhi station of Akashvani.